Hi dear students, how are you? I hope you are good. In previous lecture we discussed various characteristics of technical writing. We discussed 5 points, that is first, this is second, this is third, this is fourth, and this is five. So in previous videos we discussed various characteristics of technical writing. So now today's topic is choice of words. So dear students, if you writing any letters or something, so there is a important thing, that is choice of words collection, vocabulary power, that is very important in choice of words. That is, first point is choice of word tells about how to choose the correct words. The students, फर्स्ट पॉइंट्स ऐसा कहता है, फर्स्ट पॉइंट्स हमको बताता है, या फर्स्ट पॉइंट से हम ये समझते हैं कि जो चॉइस ऑफ वर्ड है, हम उसके बारे में कैसा वर्ड चूज करते हैं, और ये हमको बताता है कि कैसा टॉपिक है तो हमको कैसा चूज करना चाहिए और वो करेक्ट वर्ड्स कैसा होना चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स विल मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल. डियर स्टूडेंट्स, you know that if we select any words, that will be a very effective full meaning, and that sense will in a good way. So dear students, अगर हम कोई भी वर्ड्स को चूज करते हैं, राइट वर्ड्स को चूज करते हैं, तो उसका सेंटेंस हमेशा क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. सो एंड थर्ड इज वर्ड चॉइस refers to writers selection of words as determined by a number of factors including meaning, specificity, level of diction, tone and audience. Dear students, जब हम वर्ड्स ऑफ चॉइस सेलेक्ट करते हैं, तो जब जो भी राइटर सेक्शन होता है, जो वर्ड्स ऑफ चॉइस करता है, तो डिटरमाइन करता है कि उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, इंक्लूडिंग मीनिंग, स्पेसिफिसिटी कितनी है, लेवल ऑफ डिक्शन. लेवल ऑफ डिक्शन का मतलब होता है पावर, वेकअप पावर, एंड टोन मीन्स होता है रिदम, एंड ऑडियंस, और ऑडियंस को भी एक लाइन, मतलब ऑडियंस को भी क्या करता है, एक वे में रख के चॉइस ऑफ वर्ड्स को चूज करता है. सो और फोर्थ पॉइंट इज चॉइस ऑफ वर्ड्स इज आल्सो नोन एज डिक्शन. डियर स्टूडेंट्स, if you have a good diction, your selection of words will be also good. So fourth point says that choice of word is also known as diction, means कि जो choice of words होता है, that is also a form of diction. So now we discuss point 5. There are 6 principles of word choice used. The students, in technical writing, in previous videos we discussed various characteristics of technical write, and their point are 5. First is this, second is this, third is this, fourth is this, fifth is this. So in various characteristics of technical writing, point choice of word is also very important. In choice of words we discuss this, and we discuss this, and also continue to 1 2 3 4 to point 5. There are 6 principles of word choice used. Dear students, if you writing anything, any content, something topics, that is, so there are 6 principles of words. First is choose understand words. It means